Honorable Chief Minister, Mr. Siddaramaiah ji, PCC President, Deputy Chief Minister, man with the mission, Mr. D.K. Shivkumar ji, one man who is younger to all of us, whose energy is boundless, whose persuasion power is endless, and whose fight for the cause of the downtrodden, Dalits, backwards, is constant. Shri K.H. Muniappa ji, AICC Secretary Abhishek Dutt ji, my colleague Minister Bharati Suresh ji, S. Ravi ji, Shiv Shankar Reddy ji, Venkat Ramanappa साहब, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मुनियप्पा साहब को, कांग्रेस पार्टी की सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस भव्य आयोजन के लिए भी, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने गारंटी कार्यक्रम को क्रियान्वयन किया है, इस देश में यह अपने आप में एक इतिहास है। I was telling PCC President D.K. Shivkumar ji and Siddaramaiah ji that in India now there are two kind of guarantees. One is the Congress 5 guarantees that have been implemented in Karnataka. That's the genuine guarantee. But when you go to the market, many times you find there are fakeries that you will get. For example, you will get Tata Steel, but you will get a fake steel. They will put a stamp of Tata Steel. In India now, the same Congress guarantees which were mocked by Prime Minister Narendra Modi. He is to come and tell people of Karnataka during last assembly, guarantees can't be implemented. He is to say Congress people will not be able to do it. We have proved that we will keep your faith by implementing each one of those 5 Congress guarantees. Now we have a copycat Prime Minister. He is copying the Karnataka model. But it's a fake thing that he is doing. So there is a fake Modi guarantee and there is a genuine Congress guarantee in Karnataka that people have to judge from. These people only sell lies. These people only sell jumlas. These people only sell fakeries. And that's why they are now copying the Karnataka model, but they cannot do it, nor will they implement it. For Karnataka model of development, Congress model of development is founded upon people's service, is founded upon honesty, is founded upon sincerity, is founded on commitment to people, is founded upon dedication to the cause of SC, ST, OBC, minorities, youth, women, poor, farmer. That's the Karnataka model. And friends, I want to say in the end, let us all be warned. हम सबको चिंता करने की जरूरत है. BJP now wants to demolish, wants to remove Baba Saheb Ambedkar's constitution. BJP wants to do away with the constitution as enacted by Baba Saheb Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Mahatma Gandhi, and millions of others who toiled and struggled for India's freedom movement. BJP has always been troubled by India's constitution.
For almost 60 years after independence, RSS did not fly the Indian tricolor on its headquarters at Nagpur. BJP was opposed to the rights given to SC, ST, OBC, minorities and the poor in the constitution. BJP is opposed to the concept of equality before law. BJP is opposed to the fact that Congress brought in fundamental rights where all men and women were made equal. भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस देश के संविधान को खत्म करने का, इस देश के संविधान पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रही है। कभी वो ये बात आरएसएस के लोगों से कहलवाते हैं, कभी वे बात वो उत्तर भारत के भाजपा नेताओं से कहलवाते हैं, और अब फिर भाजपा के एक सांसद ने कल ये बात कह दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगले संसदीय चुनाव में जीत गई तो वो इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे। अगर इस देश का संविधान खत्म हो गया तो आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, उनके सब अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये आरक्षण का अधिकार तो छीनना चाहते हैं, पर ये आरक्षण के अधिकार तक सीमित नहीं, ये पूरे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मुनियप्पा साहब, आज आपके नेतृत्व में, बैरती सुरेश जी, एक बार इधर ध्यान दीजिए। इसलिए मुनियप्पा जी, आज आपने इस समागम का आयोजन किया है। आज आपके नेतृत्व में एक आह्वान लेने की जरूरत है। सिद्धरमैया जी के नेतृत्व में, डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, चाहे हमारे खून का एक एक कतरा चला जाए, चाहे हमारी जिंदगी चली जाए, परंतु देश के संविधान की ओर बीजेपी को हम नजर नहीं उठाने देंगे। We will not let BJP tarnish Constitution of India, even if we have to lay down our lives, even if we have to lay down our offices, even if we have to lay down the offices we hold, as including our government, we will not let Constitution of India be put under a bulldozer by the Bharatiya Janata Party. Let this opportunity be used and let a clarion call go from here that the Congress government of Karnataka, that every congressmen and women of Karnataka, that every congressmen and women of India, we will fight unto death, but we will not let Constitution be trampled upon. हजारों लाखों लोगों के समागम में आज ये संकल्प लीजिए कि हम संविधान की जिंदगी को देकर रक्षा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। न्यूज़ फर्स्ट, निर्भीतिಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ।